we are working on the first eco-friendly contrail-free aero engine. So because eco-friendly is a very broad term and it encompasses various kinds of aircraft engines. So ours is a contrail-free aero engine. Okay, developing this engine for the world, and other than that, एक organization है which is looking for, एक international organization है which is looking for 1,000 environment friendly solutions for the world. So I'm an expert reviewer there. I review solutions अपनी domain में दुनिया के लिए जो कि environment friendly हो. I also have a visiting academic researcher position in my university, जहाँ से PhD की है. PhD में भी मैं कुछ research supervise करती थी students की. This research question given to me in my PhD कि अब जो है ना दुनिया में जैसे हम जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं जहाज़ों के लिए, तो हम उसको we have to check it for the environment. It has to be environment safe. So they gave me this problem. आपने देखा होगा कि जहाज के पीछे एक smoke निकलती है. So that smoke is basically the exhaust emissions of an aeroplane. You burn fuel, you get water vapor and carbon dioxide, and that water vapor freezes as an artificial cloud. So you see this white line when an airplane is flying, and that artificial cloud has a global warming potential which is 5 times more than carbon dioxide. So water vapor भी carbon dioxide की तरह एक ग्रीन हाउस गैस है, और जब वहाँ आता है तो इससे हमारी ज़मीन की जो गर्माइश है और ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है. तो इसके ऊपर बहुत लोग रिसर्च कर रहे थे, मुझे भी इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए दी गई कि इसका कोई सद्देबाब किया जाए और इसको किसी तरह कॉन्ट्रेल्स को मिटिगेट किया जाए. तो मैंने उसके ऊपर कुछ रिसर्च की. फिर पाकिस्तान में पीएचडी के दौरान अपने वालिद साहब के साथ इस पे काफ़ी सारी रिसर्च की. तो उन्होंने एक इन्वेंशन की जो कि इंजन के पीछे अटैच होती है. एक नया इंजन बनता है जो इंजन का जो धुआं निकल रहा है उसको प्रोसेस करता है कि उसमें से लिक्विड वाटर बना सके. और ये जो पीछे आपको स्मोक निकलती है ये निकलना बंद हो जाए, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कैन रिलीज इट एज रेनफॉल व्हेन वी आर lower down in the atmosphere. So this was a very unique product. Nobody in the world had ever, developed it like that. We got it patented. हमारे उस पे international patents किए. और फिर मेरी यूनिवर्सिटी ने कहा कि तो इसके ऊपर ये तो बहुत इसका ग्लोबल इम्पैक्ट है और कमर्शियल इम्पैक्ट है, तो इसको फर्दर इस पे डेवलप commercial company with my father, and we started developing this this device that he had invented to make a new engine. So basically this is Pakistan's first aerospace and engine R&D company. इससे पहले पाकिस्तान में जितनी रिसर्च हुई है इस एविएशन के लिहाज से, वो या तो आपके पास एक किसी एयरलाइन में है या फिर डिफेंस सेक्टर में, लेकिन सिविल एरोस्पेस और एनवायरमेंटल एरोस्पेस में पहले कभी काम नहीं किया गया. और ये जो हम जहाँ इंजन बना रहे हैं ये पूरी दुनिया के लिए बना रहे हैं. मतलब इसका एक ग्लोबल, वी कॉल आवर कंपनीज बॉर्न ग्लोबल, एंड वी आर मेकिंग इट फॉर द ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री. ये इंजन दुनिया की हर जहाज में फिट होगा और पूरी दुनिया को इससे फायदा पहुंचेगा, और एक तरह की एक रेवोल्यूशन है एविएशन इंडस्ट्री में, दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में. तो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज थी कि मैं बाहर इस चीज़ को सेटअप करूं, लेकिन हमने सोचा कि हम इसको हमने सोचा भी और चाहा भी कि इसको एक पाकिस्तानी कंपनी के तौर पे इसको सेटअप किया जाए और यहाँ से बनाया जाए और फिर उसको दुनिया में मार्केट किया जाए. So basically that is my professional journey, and my daughter is, when I started this work, that is when my daughter was born. So she's been growing along with it, and she's been quite involved. Now she's grown up a bit, so थोड़ी वो independent हो गई है, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ साथ
इसमें रहती थी. इसके अलावा मैंने फ्लाइंग सीखी, प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया. और फिर यूके में जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो वहाँ पे वो आपको एरोबैटिक फ्लाइंग सिखाते हैं. अगर कोई चाहे तो उसको सिखा देते हैं. एक्रोबैटिक्स जो होते हैं, जो हवाई करतब जिसको आप कहते हैं, जो आप एयर शोज में देखते हैं, व्हेन द प्लेन इज फ्लाइंग अपसाइड डाउन एंड ऑल. So I learned that as well. And so basically that's my journey. Basically, I'm an aerospace engineer and a pilot as well. I did my master's in aerospace dynamics and PhD in aerospace propulsion, which is like, dynamics is about the study of planes, designing of planes, and propulsion is designing jet engines. मैंने अपनी अंडरग्रेड यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया था, जो मैं आपको कहानी सुना चुकी हूँ कि उसमें लड़कियों को उस वक्त दाखिला नहीं देते थे, और मैं 60 लड़कों की क्लास में एक अकेली लड़की थी. उस वक्त नस्ट में बहुत कम लड़कियां होती थी, और आई वॉज वन ऑफ देम. आई वॉज द ओनली वन इन मैकेनिकल एंड देयर वर 5 गर्ल्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग. So, anyways, after that, I worked in the industry as well. I worked in factories, motorbike plants, car plants, and then and learned flying at the Lahore Flying Club. And then I got a scholarship for my master's abroad, where I worked on drones, for the designing of an autopilot for drones. After that, I got married. I came back, I got married, and I got another PhD scholarship in jet engines, airplane engines, basically. So I went for my PhD after my marriage, and I went alone. My husband was working in Pakistan. He couldn't accompany me, but I went and I started my PhD. And then meanwhile, I made a few trips to Pakistan. My daughter was born during my PhD, and still I continued. I came back to Pakistan. मैंने यहाँ से part time continue की अपनी पढ़ाई with a very young child. And my father got involved with my work. He used to help me with my research, and my mother as well. And then so we did a lot of work together. Then when my daughter was, she could go to school at 3 years, I went back to UK to complete my PhD and my research and write my thesis. I stayed there for a year and a half. And obviously, again, my husband was in Pakistan, so I had to look after my daughter as well. And she would, when she was not at school, she would be with me to meetings, to lectures, all these things. And I think gradually she kept absorbing, a lot of data. And I think she was a very happy child. She would enjoy all these visits and the snacks at meetings. So um, so it generated that kind of an interest in her. And then, as I said, that when I came back, so since I was working with my father, we both choosing this field. Okay. I would say that I had, a very encouraging environment at home to start with. Both my parents were in the engineering and science profession. My mother is a professor of quantum chemistry at a university. My father is a scientist. So we had this environment at home to start with. Secondly, our parents, they were very supportive, but they never kind of, forced us to adopt a certain profession. But I think just the environment and the encouragement generated this interest. Um, and as for aviation, I would say that aviation is a passion. It's not really a profession. Either you have it or you don't have it. So I had this interest in aviation from a very young age, and I think one of the fascinations was the 23rd March, air shows. They were one of the great fascinations, and then obviously all the science and numbers at home.